Hi, good morning everyone. This is Rajeswari and welcome to my channel in English with Rajeswari. So in my previous videos, I have already taken plus 2 second year part, जोटा कि syllabus अनुसार plus 2 second year prose poem नेचे. So today I am going to take your plus 2 first year syllabus. तो मोर जो first year syllabus टे according to your syllabus, there are 5 prose and 5 poems. तो आज तुम्हारा से 5 poems रो मुने भी कौन ना first poem stopping by woods on a snowy evening which is written by Robert Frost, right? तो आज देखिबा जे ए जो poem लिखा है जी कहा द्वारा ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट को द्वारा, which is written by Robert Frost. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, who is रॉबर्ट फ्रॉस्ट को जानिबा जे रॉबर्ट फ्रॉस्ट किए थिले. तो ये जो टॉपिक रो ना काहे कि जे स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग. तो तुमरो एटा जो फर्स्ट ईयर सिलेबस रे तुमरो जेतिक सिलेबस है एटा होची तुमरो फर्स्ट पोएम. सो लेट्स रीड द पोएम फर्स्ट. सी द पेज नंबर 100. प्लीज लिसन इट केयरफुली. जोटा कि पोएम रे प्रोज रे तुम पढ़ी देखि बुझी जिवो, किंतु पोएम रे तार लाइन बाय लाइन गोटे जेमति कि सरफेस मीनिंग थाए, गोटे डीपर मीनिंग थाए. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लियरली एंड ट्राई टू लिसन मी केयरफुली. So first, stopping by woods, which is written by Robert Frost. So Robert Frost, now Robert Frost was an American poet and also he is a romantic poet. Also he is known as nature poet. So eighty जोटा तांकर through this topic it presents a typical Frostian dilemma, typical Frostian confusion. So eighty जो topic through रे this topic begins in ordinary situation. ए जो poem टा, the poem begins in ordinary situation and moves towards man and nature relation. से situation रो ordinary situation रो आरंभ होई छी आ एटा describe करछि कोन ना मनीष आ प्रकृति जो main and जो nature सहित relation टा को एटा को से describe करछंती. तो for him Robert Frost को पाई कोन ना for him poem begins in delight and ends in wisdom. गभीर बा साधारण आनंदर गभीर दर्शन होची कविता. क्लियर. सो इंट्रोड्यूसिंग द ऑथर को विषय जानिबा. रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट 1874 टू 1963. तो तांकर बर्थ हैला 1874 टू 1963. ही इज वन ऑफ द मोस्ट popular and critically acclaimed American poets. जी कि American poet थिले, बहुत लोकप्रिय थिले. He is highly regarded for his realistic depiction of rural life and his command of American colloquial speech. His poetry reveals a keen interest in the varying beauties of nature and the apparently small but deeply meaningful joys and sorrows of ordinary men and women. तो ये आसिले कोन ना द रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट 1874 to 1963 was an eminent American poet and also he was a romantic poet, as I said. So all lovely things of nature were dear to him. तामाने related to nature सबु बेले तांकर प्रिय थाए. एंड हिज कीन परसेप्शन तांकर जो देखिबार भंगीटा बा तांकर जो ऑब्जर्वेशन टा, हिज कीन परसेप्शन मेड हिम सी थिंग्स व्हिच एस्केप द नोटिस ऑफ अदर्स. जोटा कि अन्य माने नोटिस करि पारंती नै, से साधारण जिंस को भी असाधारण भाव रे वर्णना करिथांती. सो एठी होची कोन ना द वुड्स, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग. सो ए जो वुड्स कोन द वुड्स हैज ए स्पेशल चार्म ऑन द पोएट. एठी जो वुड्स कवि मन रे गोटे स्वतंत्र छाप छाड़ी देचे, स्पेशल चार्म ऑन द पोएट. एंड स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग टेल्स अस हाउ ए लवली डार्क एंड डीप वुड्स कास्ट हिज मैजिक स्पेल ऑन द पोएट. केमिति गोटे मैजिक कर देछि गोटे माने कवि मन रे. स्पेल मीन्स कोन मंत्र बा किछि गोटे छाप छाड़ी देछि कवि मन रे, सेटा को से स्टार्ट करथि. स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग, हाउ ही वाज अट्रैक्टेड बाय नेचर. से केमिति प्रकृति प्रति आकर्षित हो जाई छंती हला. सो फर्स्ट हला जे वुड्स. वुड्स माने कोन? वुड्स मीन्स हियर, वुड्स मीन्स जंगल, नॉट फॉरेस्ट. फॉरेस्ट बोली कहा जीवनी. जंगल मीन्स एन एरिया ऑफ ट्रीज स्मॉलर देन फॉरेस्ट. जेमती कि तुम घर चारि पाखरे बण हे जिबा, सेटा को कहा जाय
woods माने smaller than forest and area of trees गोटे छोट अंचल माने गछरे गछ लागिथिबो छोट अंचल को कहा जाय woods बोले clear so come to one more do you know this poem was a great favorite of Jawaharlal Nehru तमे जानि छ कि एई पोएमटा जवाहरलाल नेहरू प्रिय कि perhaps this poem reminded him of his responsibility बोधवे एटा तांको तांकर responsibilities तांकर दायित्वबोधता को मने पके थाए on the surface this is a simple poem जेमति कहली जे सब पोएम रो गोटे surface meaning थाए गोटे deeper meaning थाए so on the surface this is a simple poem जतो तुमे पोएम टार ना सुनछ लागुची जे से जाउतले गोटे बरफावृत माने स्नोई इवनिंग गोटे बरफ छन्न संध्या रे से ठिया आइचंदी गोटे जंगल को देखिया पाए इट्स रियली सिंपल देखा जाउची बट द स्पीकर स्टॉप्स हिज हॉर्स बाय सम वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग किंतु सेठी स्पीकर ठिया आइचंदी हिज हॉर्स तांको घोड़ा को छेड़ा करछंती by some woods on a snowy evening. He takes in the lovely scene in near silence, is tempted to stay longer, but acknowledges the pull of obligations and the considerable distance is to be travelled before he can rest for the night. किंतु से चाहिए he wanted to stop there, he wanted to see the beauty of nature, he wanted to enjoy the beauty of nature, but suddenly he remembered about his responsibilities तांको responsibility को मनेइछन and he was obliged से बाध्य होइछंती जिबा पई कोन पई ना से तांकर विश्राम नबा पूर्व तांको डेस्टिनेशन जगह रे बा तांको लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबा पई बट द एटा तांकर सरफेस लेवल से जाउचंती छिड़ा आइचंती देखिया पई से माने तांको घोड़ा को अटकेइछंती से वुड को देखिया पई बा से जंगल को देखिबा पई बट इन द डीपर लेवल the journey through the wood is suggestive of journey through life itself किंतु से जो यात्राटा एटा जीवन यात्रा सहित तुलना करछंती जे तांकर से जो जंगल देखि यात्राटा थ्रू आउट हिज जर्नी ऑफ लाइफ The speaker stops for a brief time to meditate and realizes that he needs to continue his journey किंतु सेठी स्पीकर किछि समय पई छिड़ाबा को चाहिचंती टाइम्स टू मेडिटेट माने ध्यान मग्न अवस्था रे बा ताको डीपली ऑब्जर्व करिया पई चाहिचंती एंड रियलाइजेस दैट ही नीड्स टू कंटिन्यू से रियलाइज करछंती एटा को से कंटिन्यूअसली देखिया पई चाहुचंती The famous phrase and miles to go before I sleep not only refers to the physical distance of the trip but also the long life ahead of him एटा केवल जो एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एटा केवल फिजिकल डिस्टेंस टाको देखोनी माने दूरत्व टाको देखा जाउनी बा कुहा जाउनी से विषय रे वर्णना करा जाय नै नॉट ओनली द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ द ट्रिप बट आल्सो द लॉन्ग लाइफ अहेड ऑफ हिम ता माने आगो को तांको जीवन रे बहुत आगो को जिबार अछि तांको जीवन यात्रा रे तांकर लक्ष्य स्थली रे तांको पहुंचीबार अछि सो रीड द पोएम एंड फील हाउ इंस्पायरिंग इट इज तो ये जो पोएमटा हाउ द पोएम इज सो इंस्पायरिंग फॉर अस एठी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के डिस्क्राइब करछंती एठी द प्रेजेंट जो पोएम प्रेजेंट सच ए डिलेमा इन आवर माइंड जेमति कहली जे सरफेस गोटे तार अछि डीपर मीनिंग गोटे अछि तो एटा गोटे इट इज क्रिएटिंग सच ए कंफ्यूजन इन आवर माइंड इजंट इट तम मन रे कि मो मन रे एटा निश्चित भाबरे गोटे द्वंद्व सृष्टि करछि Dilemma means confusion. So the poem beginning in an as I said before, the poem beginning in an ordinary situation and moves on towards a philosophical speculation about man and nature relation. एटा को man और nature relations को वर्णना करछि. So thus here is a dilemma between the ordinary person and the poetic person. गोटे साधारण लोक जेमिति देखिबो तार आ गोटे काव्यिक अनुभव थी कविंकर जदि दृष्टिकोण देखा ताले एटा गोटे आसुची गोटे डिफरेंस बा कंपेयर आसुची गोटे ऑर्डिनरी पेशेंट गोटे पोएटिक पेशेंट रे एंड द पोएम्स जोटे कि जले माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप सेटा गोटे पैराडॉक्सिकल द पोएम एंड्स विथ पैराडॉक्सिकली जे एटा को से केमिति सेटा को शेष करछन जे आगु को बहुत आगु को जिबार अछि आ गोटे कोन होला ना हॉर्स विषय रे एटा गोटे डिस्क्राइब होला जे तांको हॉर्स को सो हियर इट horse is the symbol of utilization object of life ba utilitarian object ba aspects of
लाइक एटी हॉर्स को सिंबॉलिक हिसाब रे निया जायछि कोन यूटिलिटेरियन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ यूटिलाइजेशन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से धीरे धीरे पोएम को गले आमे जानिबा सो सी द फर्स्ट स्टैंजा whose woods these are I think I know his house is in the village though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. The first stanza re there are 4 lines na whose woods these are I think I know तमे एठू आरंभ करिसंती कवि जे woods are outside in the village माने से जो जंगलटा ग्राम माने गाँव रो बाहर अछि whose woods these are I think I know एटी कवि कहउचंती एटा कहार जंगल बोधे से ताकू जानि छंती his house in the village दो तार घर बोधे से गाँ पाखरे he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow तमे एटी से कहउचंती the poet suggested that he knew the owner किंतु पुणी से कहचंती he will not see me stopping here से मते देखि पारिबो नाही जे से सेठी छिडा है कि तार जंगल को देखुचंती to watch his woods fill up with snow तांकर जंगलटा his woods are covered with snow बरफावृत हो जाइछि बा बरफाच्छन्न हो जाइछि काहे कि मे बी that was winter evening सेटा शीतकालीन थिला माने विंटर सीजन थिला सेति पई पूरा बरफाच्छन्न हो जाइछि तार जंगल गुडाको तमने एटी रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम्स ता आरंभ होछि कोन ना द पोएट रोड टू द वुड्स से वुड्स पाख को चढ़ी की गले एंड ही गेस दैट से माने गेस करछंती कोन दैट ही न्यू हुज वुड्स इट वाज से जानि छंती बले एटा कहार जंगल बोली एंड द पोएट स्टॉप्ड हिज हॉर्स एत पर्यंत माने से जाउछंती से हेटे अटकी छंती तांको घोड़ा को मध्ये अटकेई छंती हैला से जो फर्स्ट स्टैंजा बुझिलो जे से जाऊ जाऊ while the poet was traveling or while the poet was crushing the woods he thought that his house the owner of the house his house means kono the owner of the jungle जे जंगल रो जो ओनर तार घर his house was in the village तो से घर पदे तार गाँ पाखरे and he would not see him तांकु से देखि पारिबो नाही जे तांकर जंगल को कवि सेठी छिड़ा है कि देखुछंती बोली क्लियर देन कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा तामे एठी कविଙ୍କ मतरे एक साधारण आनंदरू आरंभ है कि जीवनर गभीर दर्शन रे समाप्त होची ए जो पोएमटा स्टार्टिंग रू जेमति कहिची जे साधारण मनुष्यटीए कवि कि तार जीवन काल मध्य रे सम्मुखीन होथिबा जो जिंस गुडा को सेठी describe करछंती My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near between the woods and frozen lake the darkest evening of the year so ethi he thought that he could enjoy the beauty of the woods which was covered with snow without the interference with its owner से भाबले जे इंटरफेरेंस करबनी से सेठी भलो से देखि परिबो पुणी सडनली से भाबिचंती कोन ना माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर एटी माय लिटिल हॉर्स एटी लिटिल कोन हियर लिटिल शोज हिज हम्बल हॉर्स और हिज ऑर्डिनरी हॉर्स माने तांकर से जो घोड़ाटा छोट घोड़ा तो कहि हेबनी सो हियर लिटिल सिंबलाइज हम्बल और लिटिल मीन्स हम्बल और ऑर्डिनरी हॉर्स तो तांकर से जो साधारण घोड़ा भाबुथिबो माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर मीन्स ला स्ट्रेंज बा ऑड जे ताको सेटा को अद्भुत लागुथिबो बा ताको सेटा ऑड लागुथिबो जे टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर तांको पाखा पाखी कोनोसी फार्म हाउस नाही बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक एठी कोन जंगल आउ बरफावृत ह्रद मझिरे तमने जंगल मझिरे गोटे लेक टे हेची जोटा कि फ्रोज हेची माने स्नो द्वारा कवर हेची तो सेटा को से बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक देयर वेयर नो फार्म हाउस नियर सो व्हाई द पोएट स्टॉप देयर एटा को तांकर से साधारण घोड़ा निश्चित भाव में भाबुथिबो द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर जोटा कि जनरली इवनिंग ऑफ द विंटर इज लॉन्ग एंड डार्क शीत रातिटा कोन कह जाय बहुत लंबा राति बोली कह जाय
जे दिनटा कहुए रातिटा बड़ हो जाए कहुच्छी द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर वर्षर बोधे से दिनटा माने से संध्याटा बहुत घन बा अंधारिया थिला तमने द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द प्लेस प्रॉम्प्टेड हिज एस्थेटिक टेम्परेचर तांकर से जो मने पकेला से जो सुंदरता को एस्थेटिक तांकर जो भावनाटा को एस्थेटिक फीलिंग को टू स्टॉप देयर सेठी अटकेया पई तांको बाध्य करता एस्थेटिक ब्यूटी और ब्यूटी ऑफ नेचर फोर्स टू स्टॉप हिम तांको जेमति बाध्य कला सेठी अटकेया पई द पोएट स्टॉप्ड हिज horse and the horse was in a confusion or the horse was in a strange ba se gote dilemma re thila je why he stopped there and he could not understand why his master or here the poet had stopped there. The horse eti jemti first to koichi the horse represents the utilitarian aspect of life एटी से जीवनर माने हॉर्स को एटी यूज कराई छि सिंबल हिसाब रे एंड ही जस्ट एवरीथिंग माने गोटे से जज करि पारुनी जे काहे के एटी तांकर मालिक छिड़ा हे छंती बिकॉज़ इट वाज डेंजरस टू स्टॉप इन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर तांको पई एटा डेंजरस हेई थाई पारे से काहे कि सेटारे छिड़ा हे छंती बिकॉज़ देयर वाज नो फार्म हाउस नियर एंड इट वाज winter evening तमे एठी आ गोटे कहूची जे द विंटर नाइट्स हियर इन विंटर नाइट्स जोटा कि डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर मध्य कहा जाय छी बुझियला देन he gives his harness bell a shake to ask if there is some mistake the only other sounds the sweep of easy wind and downy flake it is the stanza 3 he gives his harness bell a shake so jetobale when the horse was in a dilemma the horse was in a confusion why his master had stopped there at that time the horse gives his harness bell a shake tamane siye टिके जो तार जो घंटीटा तार बेकरे टंगा जाइथिला सेटा को टिके हल्लै देला काहे कि टू वार्न द पोएट बा जानिया पई he gives his harness bell a shake to ask if there is some mistake तांकर किछि भूल बसत से छिड़ा हे जाई छंती कि the only other sounds the sweep of easy wind and downy flake आउ besides the harness bell से घंटी रा शब्द छडा the only other sound was अन्य साउंड कोन थिला the sound of the sweep means sound of wind पवन बहिबार शब्द जो सुन पवन बहिबार शब्द ता सहित easy wind and downy flake ता माने silence is everywhere सबुआडे नीरव छाई जाइथिला ता भितरे केवल शब्द सुना हो जाउथिला कोन ना घंटीर शब्द ता सहित पवनर शब्द ता सहित डाउनी फ्लेक मीन्स हला पीस ऑफ स्नो जोटा कि बरफ गुडी को पड़ीबार शब्द तळ को बरफ गुडी को पड़ीबार शब्द तो एई सब शब्द तांकू सुना जाउथिला तने द हॉर्स shook its harness bell to warn the poet that it was already late हे गलान and they should leave the place और से place को तांको छाड़ीबा उचित he thought that perhaps they had come to a wrong place बोध हुए से माने गोटे भूल जगह रे पहुंची जाई छंती it was lonely से सेठी केही नथिले and the only sound they heard was that of sweep of wind and flakes of snow was falling so it was foolish to come to such a place at that odd hour ए जो odd hour रे odd समय रे सेठी छिड़ा बा ताको पई डेंजरस अटे so that's why the poet keeps his harness bell a shake to warn the poet for his mistake clear understood then come to the last stanza 4 the woods are lovely dark and deep but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep जो last two lines the and miles to go before I sleep it is the famous line जोटा कि मैक्सिमम तुम स्पीच रे मे बी नोटिस करि नथिबो बट बहुत स्पीच रे एटा को कहा जाता है सेति पय एटा जवाहरलाल नेहरू को फेवरेट पोएम थिला जे माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप तार दीटा मीनिंग अछि जेना मु बुझेबी सी द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप तमने एठी जंगल को कहा जायछि सेटा अंधारिया सुंदर डार्क
लव माने लवली डार्क एंड डीप तमें एटा बहुत अट्रैक्टिव सुंदर आउ गहलिया and beautiful. The woods are beautiful, but I have promises to keep. Eti tamane here the poet emphasizes the fact that he had many promises to fulfill. Tankoro he had many responsibilities, he had many promises. Tankoro बहुत किछि प्रतिज्ञा अछि, tankoro बहुत किछि दायित्व अछि. He had to fulfill his duty. तांको सेटाको तांको कर्तव्य पूर्ण करिवार अछि. He wanted to enjoy the beauty, he wanted to watch the woods, but किंतु से तांको देखिया पे चाहुचंती किंतु he had many responsibilities. तांकर बहुत सबु दायित्व अछि. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Here it suggests sleep means in one word गोटे अर्थ रे एटा होची sleep. Here sleep means death. जे डेथ एटी कहा जाउची सोइबा मीन्स मृत्यु. जे मृत्यु पूर्वर बिफोर डेथ ही हैड टू अचीव हिज गोल. तांको तांकर लक्ष्य पूर्ण करिवार अछि. ही हैड टू फुलफिल हिज एम ऑफ हिज लाइफ. तांकर जीवनर लक्ष्य मध्ये पूर्ण करिवार अछि. जदि हमें सिंपल मीनिंग रे देखिबा स्लीप मीन्स बिफोर रेस्ट. तांको रेस्ट करिबा पूर्वर तांकर बहुत दूर आगु को जिबार अछि. तांकर डेस्टिनेशन पॉइंट तांकर लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबार अछि रेस्ट नबा पूर्वर. इन अदर वर्ड्स हियर स्लीप मीन्स डेथ. मृत्यु पूर्वर तांको सब किछि रेस्पोंसिबिलिटी तांको सब किछि ड्यूटी को फुलफिल करिबार अछि. सो इटा होछि ए लॉन्ग जर्नी अहेड. माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप मीन्स ही हैड ए लॉन्ग जर्नी अहेड. आगु को गोटे जीवन यात्रा रे तांको पहुंचीबार अछि. So before he could go eternal or before his death. So simply the poet has no time to stop there. सेठी तांकर समय नाही रहिबा पई. And he has many duties to perform or response. तांकर बहुत किछि responsibilities मध्ये रहिछि. So एठी आउथरे कहि दोछि the beauty of the woods was a challenge to his poetic temperament. तांकर ए जो सुंदरताटा तांको पई जे से अटकीबे ना ताकू छाड़ी की जिबे. Though it was lovely, it was dark, it was deep, and its beauty was shrouded in mystery. से जो सुंदरताटा गोटे रहस्य तांको पई थिला. The poet in him wanted to stay there, to wanted the beauty, even it was dangerous. But the farmer in his thought like the horse. एठी दी जन को कहै छै जे the owner of the house जो the owner of the jungle and the horse. दी जन जाको जो पोएटिक जो पैशन टाको से बुझी पारनांती कहीं ना दे वर ऑर्डिनरी मैन. ऑर्डिनरी थिंकिंग तांकर ऑर्डिनरी थिंकिंग हिसाब से से कविंकर भावनाटा को बुझी पारिबे नाही. एंड बट द ऑर्डिनरी मैन इन हिम प्रॉम्प्टेड हिम टू लीव द प्लेस एज ही हैड मेनी अदर ड्यूटीज टू फुलफिल. सो एज ए ऑर्डिनरी मैन तांको लागुची सेटा को से छाड़ी की जिबार अछि. सो द पोएट सेज सेठी सेत पे से कहचंती जे माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. तांको डेथ पूर्वरु तांकर लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबार अछि. तांकर कर्तव्य सब पूर्ण करिबार अछि. क्लियर बुझी पारलो. ताको आउ थरे स्टांजा वाइज फर्स्ट स्टांजा रो जो शॉर्ट ब्रीफली समरी कहूची. द पोएट when the poet is or while the poet was returning home, he stopped by a wood. से जंगल पाखरे रहिले and he suggested he knew the owner of the woods. जे कि भाबुतले जे से जानि छंती से ओनर को. here woods कोन ना an area of trees smaller than forest. एटा को माइंड रखियो जे woods माने कोन. then the owner was living in a village far away from the jungle or from the woods, and he could not interfere with the enjoying the snow covered woods to his heart's content. से सेटा को इंटरफेरेंस करिवो नाही जेतबेले कि कवि देखुतले. and his horse took his stopping there as a strange incident or as an odd incident. and he saw no farmhouse near the woods. It was a winter evening and the water of the lake was frozen, जोटा कि बरफावृत बा बरफाच्छन्न जंगल बा बरफाच्छन्न ह्रद थिला. नाइट was descending rapidly माने जेमति कि राति जल्दी आसुथिला जोटा कि बहुत अंधार थिला. से सेतमे एटा कहै जाय छी. then second एटा होला फर्स्ट एंड सेकंड स्टांजा. then stanza 3 and 4 रो समरी हैला कोन. the horse
सेक्स हिज हार्नेस बैंड से तांकर घंटीटा को बजेबा को चाहते बिकॉज ही वांटेड टू से द पोएट दैट इट इज ए मिस्टेक टू स्टॉप देयर द विंड इज ब्लोइंग शार्पली and snow is also the snow is falling the woods are lovely dark and deep the poet wants to stay there but he has other responsibilities he has other duties to attend clear बुझी पारलो जे तांकर बहुत किछि ड्यूटीज थिला फुलफिल करिया पय तमरे एठी को आउची कोन ना कवि को मन भितर मध्य द्वंद्व आसीछि जे तांको हृदयर जो कविटीर इच्छा बा सेठी अटकी रही कि प्रकृति को सी तार शोभाटा को निरीक्षण करने चाहूँगी किंतु एज ए रियालिटी तांकर वास्तवता जीवन में बा वास्तवतार रियालिटी कौन ना वास्तववादी चेतना तांकु सेठी अटकैबाकू देई नाही बा तांकर अनेक काम बाकी अछि पड़छि बोली से सेठारु जीवाकू पड़ियो बोली कहिसंती क्लियर जे ए पोएमटा थिला कोन बहुत इट्स ए शॉर्ट पोएम इट हैज 4 स्टांजास माने इते 4टा स्टांजा रहिछि जेमति कहिछि राइम स्कीम एरो सब पोएम रो राइम स्कीम थाए तो राइम स्कीम कोन राइम स्कीम देखो फर्स्ट अछि आई नो देन दो देन हियर देन स्नो नो हैला ए दो बी हियर सी देन असला ए माने ए बी सी ए तो तामाने होची कोन नो सहित मैच होची कोन स्नो तामाने ए आसिला दो अछि अलगा सॉरी नो एंड दो हियर एंड स्नो सो ए बी ए या राइम स्कीम होची ए बी ए सेमती सेकंड स्टैंजर अछि कोन क्वेयर नियर लेक ईयर तो क्वेयर हैला कोन ए क्वेयर नियर ए देन आसिला फ्रोजन लेक लेक अच्छी लेक हैला बी ईयर हैला ए बी ए सेमती थर्ड स्टैंजा रे राइम स्कीम कोन ना सेक मिस्टेक ए स्वीप बी फ्लेक ए सेक मिस्टेक फ्लेक ए बी तामने ए बी ए तो यार सबुडा को राइम स्कीम सेम अछि कोन ए बी ए एटा को नोटिस करिवो तुमर जो स्टैंजा जो लाइन अछि सेथे लिखि दबो इट्स राइम स्कीम पढ़िबो तुमरो जे राइम स्कीम कोन इट्स राइम स्कीम इज ए बी ए अंडरस्टूड सो तमरो इन द नेक्स्ट क्लास I'll discuss the question answer important question answers in the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening. So before it please don't forget to subscribe my channel and like and share my videos. जो माने कि तुम जानि थिबो जे जो मानकर दरकार एटा पढिबा प्लीज शेयर माय वीडियोस थैंक यू फॉर योर सपोर्ट हैव ए नाइस डे.